for example, you are storing record of 50 students in your class. If somebody left the course, you need to delete that student. But even if you delete the record, the memory allocation will be there because already you have allocated space for 50 students. So very obvious that the आपको in between while executing the program you cannot change the size of the array. But this is quite possible in case of dynamic allocation, linked list, right? So the array, the number of elements or the number of record can grow or the number of record can shrink. Okay? So अगर आपको student increase हो गया, if any new arrival is there, then you can add that student or you can delete any outgoing student. Is it clear? Anybody having any confusion? Why we are studying this? Talking about this linked list. Those who are background in PS, so it's not difficult for them. But those who are new to see this data structure, very very important to get connected to that. Anybody having any doubt? No, sir. So so this is a dynamic, very basic data structure, right? And very often we use it. तो आपको हर जगह पे क्योंकि आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको बढ़ेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको कम हो जाएंगे, तो ग्रो एंड स्ट्रिंग. This is the reason why we need to use this dynamic data structure. So it's a dynamic data structure. It provides flexibility in adding, deleting, or rearranging data items at runtime. That we cannot do with array, static array. Even if you remove one element, the memory space is there. And what is dynamic memory management technique? It permits us to allocate additional memory space or to release unwanted space. Suppose some record is there and that space is occupied. Now you do not need that space. अगर आपको उस space जरूरत नहीं है, you can release or free that space so that other can use that. Suppose you have declared an array of 100 elements and you have only 10 elements. There is wastage of memory, right? So if currently you have 10 items, you allocate memory for 10 items. As and when you require more than 10 items, अगर आपको जरूरत पड़ा कि आपको और 10 एलिमेंट चाहिए तो 10 और ऐड करिए. अगर आपको है कि अभी नहीं है, हमारे पास अभी 8 है, 2 को रिमूव कर देना, रिमूव कर दीजिए, राइट? So it is very flexibility is there. So this flexibility, due to this flexibility, we use this linked list. So it permits us to allocate additional memory space or to release unwanted space at runtime, thus optimizing the use of storage space. जितना जरूरत है उतना आप memory space allocate करिए. जब जरूरत नहीं है, you never allocate space because that space can be used by other programs, right? What is dynamic memory allocation? The process of allocating memory at runtime. One is at compile time, other is at runtime. So runtime पे आप as and when you require more elements, you go on adding or inserting elements to the list. So the list keeps on growing.
if you go on adding elements to that list, the list keeps on growing. ठीक है, अगर आपको element नहीं चाहिए तो आप delete कर दीजिए, the list shrink, list आपका shrink कर दो, right? So memory management functions. So in C we'll see number of functions are defined, predefined functions are here, library functions are here. We'll be talking about malloc. So this malloc, most frequently this malloc is used. The malloc function malloc that allocates request size of bytes and returns a pointer to the first byte of the allocated. So whatever size you require, कि आपको 10 एलिमेंट है, किस टाइप का एलिमेंट है, इंटीजर टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि कैरेक्टर टाइप का है, राइट? तो उसके लिए कितने बाइट का रिक्वायरमेंट, वी नो दैट हाउ मेनी बाइट्स इंटीजर टेक्स्ट, हाउ मेनी बाइट्स कैरेक्टर टेक्स्ट, हाउ मेनी बाइट्स फ्लोट डबल टेक्स्ट. So based on the type of data that you require, so based on that you allocate or you request those many number of bytes, तो आपको malloc आपको allocate करके देगा. ठीक है, तो आज एंड व्हेन यू रिक्वायर, जब आपको जरूरत पड़ गया कि नहीं हमको और चाहिए भी, तो allocate कर लीजिए उसको. Another function is calloc. Array of elements, right? So initializes them to 0 and then returns the point. Then there is a function called free, freeze previously allocated space, realloc, modifies the size of previously allocated space, whatever size you have allocated, so abhi aapko chahiye or so reallocate, so reallocate. So usually we use this malloc function in this dynamic data structure linked list. Okay. So this is where the C language provides a number of ways to handle this dynamic allocation. Right? So the process of allocating memory at runtime is described as dynamic memory allocation. So to see how once you write a program, you need to know what is the storage, what is the storage, where your instruction is getting stored, where the variables getting stored. So variables can be a local variable, can be a global variable. So where global variable gets stored, where local variable gets stored, where free memory reside, कहाँ पे free memory है, global variable कहाँ पे store होता है, C program instructions कहाँ पे store होता है, right? This all you know to have more clarity. And if you see this memory allocation process associated with the C program, you'll see local variables, they are stored in the stack. So, so it is stack. Stack is a data structure. Stack. Last in, first out. Right? Stack of plates. Stack of plates आप रखते हैं. जो last element होता है stack में, वो पहले निकलना पड़ता है. आप नीचे से प्लेट खींच नहीं सकते हो, प्लेट गिर जाएगा, right? फ्री मेमोरी आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर पे है, हीप स्टोरेज पे है, right? Right? So this instructions and global variables, right? So they are stored in the permanent storage area, right? Known as permanent storage area. Whereas the local variables, they are stored in stack, right? तो ये जो आपका local variable है, global variable है, बीच में है the space, that is the heap. Right? This free memory region is called the heap. The size of the heap keeps changing.
when program is executed to creation and deletion of variables, right? Because you go on creating, right? Go on deleting. If you go on creating, obviously the size will change. If you go on deleting, the size will change, right? So therefore, it is possible to encounter memory overflow. अगर आपको overflow कब होता है? जब आपको आप insert कर रहे हो, आपका free space नहीं, तो you need to keep track of the free space. कितना मेमोरी है, आप कितना वहां पे डालना चाहते हो, राइट? ठीक है, अगर आपका स्पेस नहीं है, फिर आप स्टार्ट में जो ऑपरेशंस आप करते हो, दैट इज ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, स्टार्ट फुल हो गया, यू कैन नॉट insert an element into the stack, तो स्टोर नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन, राइट? देयर इज नो एलिमेंट, यू आर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट्स व्हाट, राइट? तो वो भी आपका पॉसिबल नहीं, राइट? So similar to that, you need to keep track of the memory, right? So how we do this using this malloc function, which is very commonly used in allocation of dynamic memory, right? So block of memory may be allocated using this. Void. This means that we can assign it to any type of pointer. So see this syntax, say ptr is equal to cast type malloc, यहाँ पे byte का size है, where ptr is the pointer of type cast type. Whatever it is, integer देंगे, float देंगे, character है, whatever type of data you have, that is specified here, right? So वो आपको assign to that type of pointer, that type of pointer, integer है तो integer type of pointer. So for example, the statement x is equal to int, अगर cast int है, integer type का है, malloc 100 into size of operator आपने यहाँ पे यूज किया size operator, then int. तो int का जो size है 100 times, so reserves the memory space equivalent to 100 times the size of an int bytes, right? इतने bytes को वहाँ पे allocate किया, the address of the first byte of the memory allocated the pointer of type of int. सिमिलरली अगर आपका इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर है, तो यहाँ पे कैरेक्टर लिखिए, राइट? तो अगर आप यहाँ पे malloc करके आप 10 लिख दीजिए, दैट इज allocates 10 bytes of space to the pointer of type कैरेक्टर, जिस टाइप का ये होगा उस टाइप का pointer, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा है दिस मींस दैट वी कैन असाइन इट टू एनी टाइप ऑफ, तो ये आपको मेमोरी एरिया विद द साइज बाइट्स, तो आपको ऐसे ही सिंपल वे में आप once your memory gets allocated, then you can work on that. तो आपका पॉइंटर पे अगर आपका CPTR हो या PTR हो, वहाँ पे एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट, यहाँ पे PTR हो या यहाँ पे CPTR हो, right? So that is so CPTR or PTR in both the cases, right? तो ये आपको एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट फर्स्ट, तो केस ऑफ दिस कैरेक्टर पॉइंटर, राइट? बिकॉज आपको 10 बाइट्स का है यहाँ पे, राइट? 10 बाइट्स का allocate 10 बाइट्स ऑफ स्पेस, तो CPTR कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट, 10 बाइट्स का टोटल है आपका 1 2 3 4 5 6 7 9 10, टोटल 10 बाइट्स आर देयर, and CPTR basically pointing to the first byte, that is पॉइंटिंग में से फर्स्ट बाइट, अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस CPTR में होगा, तो CPTR in this particular case, in this particular statement, CPTR holds the address of the first byte, ठीक है? तो यहाँ पे एक
peculiar चीज ये है कि आपको space allocated dynamically has specific name. Right? So its content can be accessed through a pointer because everything is handled by a pointer. Because the pointer stores the address of the first byte. If you go on incrementing the pointer, you will be point to the next byte till the end of the that list. Right? So आपको कोई यहाँ पे नेम नहीं है, कोई जो स्टोरेज स्पेस से कोई नेम नहीं है. You go on because in case of array you have seen contiguous memory allocation. But here you will see a link to the next item. So initially, whatever we are talking about, this is all about the linear linked list. Linear list. So एक node है that is pointing to the next node. Next node point to the next node. Go on like that. Right? So after that, we'll see different types of linked list. Right? So ये हो गया आपको how to allocate a block of memory using malloc. Because you want to have dynamic memory allocation, right? If you want to have dynamic memory allocation, you go for a simple library function that will be malloc. And using malloc, you have pointer that points to that list, and which holds the address of the first byte. Is it clear? Anybody having a doubt? Anybody having any doubt? No, sir. Okay. तो एक बार आपने ये पॉइंटर को पॉइंट कर लिया, then you can have various operation on that list. एक लिस्ट है तो वेरियस आइटम्स होगा, वेरियस आइटम्स है तो आपको ऑब्वियस ऑपरेशंस में क्या होगा, आप हर एक आइटम पे जानना चाहोगे क्रॉस द लिस्ट. आप एक उस लिस्ट में एक आइटम ऐड करना चाहोगे, दैट इज इंसर्शन ऑपरेशन. यू नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू दैट लिस्ट. आपको एक लिस्ट है, आपको कहा जाएगा कि डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम दैट लिस्ट. डिलीट ऑपरेशन में आ जाएगा, राइट? तो इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्स द लिस्ट. फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करिए, एंड तक पहुंचिए, ट्रैवर्स द लिस्ट. ठीक है? आप नहीं तो बोलेगा नहीं, यू सर्च एन एलिमेंट इन दैट लिस्ट. वेरी कॉमन ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन. ठीक है? तो सर्चिंग ऑपरेशन के लिए आपको एक की चाहिए, और की देगा, उस एलिमेंट को आप वहां पे सर्च करेंगे. तो पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट? वी हैव सीन हाउ टू इंक्रीमेंट अ पॉइंटर अरिथमेटिक. सो इट विल पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट आइटम, राइट? तो आपको अगर मैचिंग हो गया तो आप डिस्प्ले कर दीजिए, हाँ लिस्ट में है, इट इज इन द लिस्ट. यू डिस्प्ले इट. इट इज नॉट इन द लिस्ट, there is element not found. Very simple, right? तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि आपको मेमोरी कैसे अलोकेट करना है. यू आर गोइंग फॉर द malloc फंक्शन. तो malloc फंक्शन यूज करके कैसे हम पॉइंटर पे उस लिस्ट का फर्स्ट बाइट का एड्रेस. ठीक है? तो वंस द पॉइंटर होल्ड्स द फर्स्ट बाइट, then you can very simply perform all the operations. ठीक है? Now let's revisit the linked list. So it is one of the basic types of dynamic data structure. Dynamic data structure, not static data structure like arrays. Right? It is a list whose order is given by links from one line to the next. So obviously यह बहुत सारे आइटम है. मान लीजिए आपने स्टोर करना है 10, 20, 30, 40, 50. आपको 10 आइटम स्टोर करना है. अरे लेते तो 10 आइटम इजीली आपने डिक्लेयर कर दिया, अरे साइज 10 का आपने स्टोर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 10, 20, 30, 40. But in this case, what we'll have here like 10 and 20 के बीच में एक पॉइंटर है. मिनिमम आपको दो फील्ड यहाँ पे आ जाएगा. तो कहेंगे आप नोड कहेंगे. दो फील्ड में एक तो वैल्यू हो गया, दैट इज द आइटम वैल्यू. द नेक्स्ट फील्ड इज द पॉइंटर. पॉइंटर इसलिए यू वांट टू हैव अ लिंक बिटवीन द फर्स्ट टू आइटम.
लिंक हो गया, देन द सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के बीच में एक लिंक करना है आपको ऑब्वियसली। सो हर एक नोड में मिनिमम दो आइटम, दो फील्ड होने चाहिए, राइट। एक हो गया वैल्यू जो आपको स्टोर करना चाहते हैं, एंड द अदर आइटम इज, अदर फील्ड इज द address. The first node storing the address of the second node. Second node storing the address of the third node. Third node storing the address of the fourth node. It goes on like that. It is a linear linked list. The last element is a null. और वहीं पे ब्रेक आपका तीन एलिमेंट, तीन नोड का आपका लिस्ट है, तो आपको लास्ट एलिमेंट का आपका null, right? So the allocation, remember that the allocation can fail if the space in the heap is not sufficient to satisfy the request. क्योंकि आपने पहले दे दिया है, फ्री मेमोरी हीप से आता है, अगर हीप में उतना मेमोरी नहीं है जितना कि मेमोरी आपने रिक्वेस्ट किया है, राइट? बिकॉज यू रिक्वेस्ट some number of bytes, and if those many number of bytes are not available in the heap area, obviously it will not be allocated. तो आपको हीप का साइज देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये कितने बाइट का एलोकेशन हो सकता है, राइट? अदरवाइज दिस एलोकेशन कैन फेल, राइट? बिकॉज सफिशिएंट मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट राइट? इफ इट फेल्स तो वो आपको एक रिटर्न करेगा null पॉइंटर, राइट? So we should therefore check whether the allocation is successful before using the memory pointer, right? Because everything you are handling with the help of the pointer, right? So अगर आपको allocation हुआ ही नहीं, allocation successful हुआ ही नहीं, then you cannot traverse the list or do any operation in the list, right? अगर आपका pointer null hold कर रहा है, that means memory is not successful, memory allocation is not successful, right? So you need to check for this, right? You need to check for this. Because the allocation can fail if the space in the heap is not sufficient to satisfy the request, right? So those many number of bytes it can be allocated or not, so ये आपको पता तब चलेगा जब आपको वहाँ पे size है. So such steps you need to. So it is a collection of structures ordered not by their physical plus is contiguous memory allocation, right? But by logical links that are stored as part of the data, the structure. तो ये आपका स्ट्रक्चर आपने देखा है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, राइट? तो आपने स्ट्रक्चर को देखा है कि मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन होल्ड, ठीक है? तो ये आपको द लिंक इन द फॉर्म ऑफ द another structure of the same kind. The link is in the form of a pointer to another structure of the segment. For example, say ये आपका एक structure node आपका field है, इसमें दो minimum number of field है. First is item of integer type. तो जरूर नहीं कि आपका यहाँ पे आप integer हो, आपका कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ पे integer लिया गया है तो आइटम का टाइप integer है. नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका स्ट्रक्चर टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है नोड, right? The self-referential structure. This is the pointer. Next, it is pointing to the next node. ये आपका सिंपल, आपको ऐसे ही आपको डायरेक्ट बनाना पड़ेगा. This is the basic syntax. You can have more than one item or more than one value. तो जरूर नहीं कि एक ही हो. यहाँ पे सिंपल के लिए एक ही आइटम लिया गया है, आइटम, राइट? वन आइटम और वन वैल्यू. You can have multiple values in नोड में मल्टीपल वैल्यूज भी आप रख सकते हो. तो जरूरी नहीं कि एक ही नोड, एक ही वैल्यू आप इस नोड पर रख सकते हो. मल्टीपल वैल्यूज यू कैन दैट नोड, ठीक है? इट ओके? नहीं, इट ओके? यस सर.
पानी है कि नहीं? सर हो गया है। The structure may contain more than one item with different data types. यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का दिया है, मान लीजिए आपका इंटीजर है, फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तीन अलग अलग टाइप का है, that you can store because the behavior of a something that structure multiple different types of data types को रख सकता है, hold कर सकता है, right? So this is how we define a node, right? A node. So if अगर आपका लिस्ट आपका 3 नोड का लिस्ट है, दैट इज 3 वैल्यू आप रखना चाहते हो लिस्ट में, तो आपको 3 नोड बनाने पड़ेंगे, राइट? नाउ यू सी इट्स a linear list. Whatever we discussed till now, it is all about the linear list. See, this is the data, this is the pointer basically pointing to the next node. So 1, 2, 3, 4 nodes are there. For example, the first is stored in the head of node. In head, we have the address of the first head. And this is, there is no further node, so the last after null. ठीक है, जिससे आप वहां पर ट्रैवर्स, अगर आप फुल लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, जब नल पहुंचेंगे वही बंद हो जाना, वहीं पे आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि भाई जब नल आ गया तो दिस इज एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है? जैसे आपको आप सर्च करते थे, दैट इज to locate the end of the string. The end of the string is marked by a null character, right? Similarly, here we have a null point, right? Okay. Now we see the advantages of linked list. The primary advantage of linked list over arrays is that linked list can grow or shrink in size during the execution. Already we have discussed this. Why we are about list? Array का size fixed है, static है. This is the reason why we are discussing or trying to learn linked list. It doesn't waste memory space. अब 10 एलिमेंट चाहिए, 10 एलिमेंट का बनाइए, मेमोरी एलोकेट करिए, राइट? स्टोर values for 10 elements, right? And if you require more items, yeah, go on adding element by allocating memory, right? And try to have link among them. Okay. So it provides flexibility in allowing the items to be rearranged efficiently. क्योंकि आपको मान लीजिए आपको इस नोड को यहाँ ले आना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा भाई, अभी ये नोड आपका इस नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो यहाँ हटा के आप इस नोड का एड्रेस रख देंगे, तो नाउ यू वांट टू नेक्स्ट नोड, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया और ये एड्रेस यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली तो ये इसको पॉइंट कर रहा है और इसको पॉइंट कर रहा है, तो रीअरेंज कर सकते हैं, राइट? या आप सॉर्टिंग केस में करते हो, अरेंज केस में करते हो, गो ऑन अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, तो आप यहाँ पे खाली एड्रेस को ही चेंज करते हैं, ये नोड होल्ड कर रहा है इसका एड्रेस और ये नोड होल्ड कर रहा है इसका एड्रेस, राइट? नाउ दिस नोड पॉइंटिंग टू दिस नोड एंड दिस नोड पॉइंटिंग टू दिस नोड. लॉजिकली आपको क्या करना है, खाली उसको लिंक को जो एड्रेस है खाली यहाँ स्टोर कर देंगे, नाउ दिस नोड पॉइंटिंग टू दिस नोड. और आप चाहते हो कि ये आपको नाम तो यहाँ पे रीअरेंज करना बहुत, because as everything is handled by pointer address, तो एड्रेस को चेंज कर दीजिए, उसके बाद जो आना है वो आ जाएगा. इज इट क्लियर? पवन, पवन, पवन लगता है सो गया. एनीबडी, those who are not sleeping, is it clear?
जगा हुआ है, सब सो गया। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। Now the limitation of linked list. The access to any arbitrary item is little difficult and time consuming. जब access करते हो time consuming, पॉइंटर देके चेक करते हो, राइट? टाइम। सर एक एलिमेंट में डेटा और दो वैल्यूज स्टोर करना पड़ रहा है। हाँ, ये दो फील्ड आपको मिल, जिसका रीजन है आपको यहाँ पे लेगा, राइट? इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह स्पेस का अरेज the same number of items because each item has an additional link. Next है आपका link field यहाँ पे, अरे होता तो link नहीं होता तो इससे नहीं लेता भाई, कोई चीज आप लेंगे पेज पर लेगा ना, राइट? लिंक लिस्ट लिनियर लिस्ट आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है, राइट? आपको अगर आपका सर्कुलर है तो इट हैज नो बिगिनिंग नो एंड। सर्कुलर हो गया तो एक लास्ट का लिंक है, फर्स्ट आ गया सर्कुलर हो गया, तो लेकिन कोई पे है जस्ट लाइक लिनियर लिस्ट, द लास्ट आइटम पॉइंट्स आफ्टर द फर्स्ट आइटम। तो घुमा दीजिए ऐसे, घुमा दीजिए उसको, एड्रेस को यहाँ रख लीजिए, तो यहाँ पे एक सर्कुलर लिस्ट डबली लिस्ट। So it employs both forward and backward on the circular form. And this is a simple way to implement this. Online resource will find number of programs for this implementation. See here, you create a node, simple node having one value, and this field is the self-referential field, that is the structure, same node, right? Pointer to that, right? So there is a function called print link list. So it basically display the values there in that list. So आपको access करने के लिए तो आपको पता है कि this dash on this arrow is used, right? So you go on incrementing the pointer. So p is equal to p next. So first node का value आप print करिए. So p is equal to p next. तो next node पे चले जाएगा next time, because the last node link is null. If it is not equal to null, तो आप उसका print कर लीजिए, right? And finally, you see this main function. So here we have a head node, because it three node structure, node 1, node 2, node 3, right? So initially आपका null है सब, null value, right? आपने अभी मेमोरी allocate किया, right? सबका तो एक ही टाइप का है स्ट्रक्चर नोड के लिए आपने भी दिया है वैल्यू, तो उसके लिए आपको 1 2 3 के लिए आपने यहाँ पे साइज अप दिया,
नोड का साइज लिया, राइट, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो गया यूजिंग मार्कआउट, राइट। वैल्यूज देना है, दिस इज वन इज बेसिकली फर्स्ट नोड, टू इज सेकेंड नोड, थर्ड नोड। तो फर्स्ट नोड का बिकॉज आपका फील्ड है वैल्यू फील्ड का आपको 1 रखना है, सिंपली राइट 1 वैल्यू 1 आरो वैल्यू इक्वल टू 1, 2 आरो वैल्यू 2, 3 आरो वैल्यू 3, सो 1 2 3 आपका उसपे फर्स्ट नोड पे 1, सेकंड नोड पे 2, थर्ड नोड पे 3 आ गया, राइट, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड। सो नाउ टू कनेक्ट नोड, बिकॉज अलग अलग हो गया, नाउ यू नीड टू पुट द एड्रेस ऑफ द सेकंड नोड इन फर्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ द थर्ड नोड इन सेकंड नोड। तो एड्रेस ऑफ 1 का नेक्स्ट, 1 क्या, 1 आपका फर्स्ट नोड है, 1 का नेक्स्ट में आपका 2 का एड्रेस आपने दे दिया, ठीक है, 2 का नेक्स्ट में आपने 3 का एड्रेस दे दिया, और 3 का नेक्स्ट में आपने नल कर दिया। नाउ ऑल द 3 नोड्स दे आर कनेक्टेड। देखिए सिंपल वे में आप एड्रेस को जब आप दे देते हो, नाउ देयर इज अ लिंक। The link is established when you have the corresponding address here. Second node, third node के बीच में लिंक है, लिंक है मींस व्हाट, कि आपने थर्ड नोड का सेकंड नोड पे एड्रेस को दे दिया। हाँ, इससे बातें जाते हैं। ठीक है, so now printing node values, right? So head 1 से आपने हेड से स्टार्ट किया, तो उसको हेड को पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे जो आपका लिंक लोड है आपका p इज पॉइंटिंग हेड, तो आप फर्स्ट नोड से शुरू करिए, this is not null, go on printing the values, so obviously you will get that value, right? So basic operation पहले से आपको कहा था, that is traversal, insertion, deletion, search, sort. These are the basic operations that you can perform on a list, right? So traversal, that is access each element of the list, linked list. Insertion adds a new element to the linked list. Deletion removes the existing element. Search, find the node, the linked list. Sort the nodes of the linked list, right? तो आपको यहाँ पे traverse करना, सिंपल से पहले आपको देखे थे वहाँ पे हेड से आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपको चेक करना है whether it is equal to null or not, right? So you go on, finally see the output of this segment of code is like 1 2 3, like this. So that is a link. You go on changing the pointer, so it will be pointing to the next node, next node, next node, like that. So here insert at the beginning, for insertion at the beginning, allocate memory for the new node, store data, change next of new node to point to head, right? So beginning पे आपको, यहीं पे आपको मान लीजिए तो ये आपको
until the current node is null, so the last element points to the null, right? जैसे कि आप string में करते हो null तक जाना है, we go on. So for that you need to take a loop. Okay. So this is how we search. So similarly, other operations also you can perform, like sorting operations. Right? But the basic concept of this dynamic data structure, we need to understand why at all we are using this linked list instead of arrays. Because a list can be created using arrays, so why we are using this linked list? This is the beauty of this data structure, which is very easily we can insert an element, we can delete an element, right? Delete an element. So this flexibility is there, right? So by manipulating the pointer, we can have this insertion, deletions very easily. Right? So in data structure, we'll be studying the complexity of this different types of operations, right? Your next semesters, right? Anybody having any doubt? No, sir. Sir, बोले can you please upload the attendance list of our class? attendance list. Sir, I mean how much percentage we have present amount? Not much worried about your attendance. You know how many lectures you have attended? Around 25, sir. तो अभी क्लास में जाएंगे मंडे को आप अच्छा एक ये है कि you must be knowing that due to foundation day the last class was shifted to Saturday, right? Yes, sir. You know that? Yes, तो sir. सैटरडे मेरा क्लास है, फ्राइडे का क्लास सैटरडे हुआ ना, फ्राइडे का 9 o'clock है, ठीक है? देखते हैं बाय दैट टाइम पहुंच पाता हूँ नहीं पहुंचता, ठीक है? यू प्रिपेयर फॉर योर वाइवा, राइट? बिकॉज मंडे विल बी कंप्लीटिंग योर टेस्ट एंड वाइवा बोथ, ठीक है? एंड आपको एक कौन है तो आपका टेस्ट है, आपका क्विज है ट्यूसडे को, राइट? So any topic you want to be discussed, because almost the syllabus is over. Any topic you want to be discussed in class? There is a doubt? सर कल का मतलब इससे पिछले क्लास में जो ऑनलाइन पढ़े थे और आज का सर वो स्लाइड सर शेयर कर देते तो सही रहता सर। आज कितने बजे आप आए हो? सर हम शुरुआत से ही क्लास में, एक्चुअली कॉल ड्रॉप हो गया था तो, अच्छा तो सर मतलब ठीक, कर देंगे, अभी कर देंगे, ठीक है, थैंक यू सर। पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादा, ठीक? Anybody want to say something, anything? Any other query? और कुछ है? Any problem? Anything to be discussed? So those who are short in attendance, they need to attend some extra classes to make up that, right? So on Monday, I'll let you know who are calling sort of attendance, right? For your lab and theory, ठीक है? तो जो जिसका है वो अगर possible है तो extra हो सकता है. I'll try it because you have 1 week left, right? In that 1 week, if extra classes can be arranged, then only your attendance आपका manage हो जाएगा, otherwise skill है.
Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.